mineral which is potassium. Symbol is K. Okay. So potassium, if we talk about, it is the third most abundant mineral which is found in our body. Okay, when it gets inside our body, it functions as an electrolyte. So we will write first and then we will explain what we are writing. Okay, so it is an important in our body, third most abundant mineral present in human body, functions as an electrolyte, regulates nerve conduction, muscle contraction, fluid balance. Okay, so it is an important mineral in our body, third most abundant mineral present in the human body, functions as an electrolyte and regulates the nerve conduction, muscle contraction and the fluid balance. Okay, so we will talk about what is an electrolyte first, and then how does an potassium function as an electrolyte. See, if we talk about an electrolyte when it is dissolved into the water, it gets dissolved into the anion and a cation. Okay, a positively charged ion and a negatively charged ion. So if we talk about potassium when it is dissolved into the water, it gets dissolved and it releases positively charged ions. Okay, it gets converted into the water in positively charged ions. That is how it functions as an electrolyte. So we know that the electrolytes are important in our body in order to regulate so many functions. If we talk about specifically about potassium, so as an electrolyte, which functions it does perform? It regulates the nerve conduction, muscle contraction and the fluid balance. First of all, we will discuss about the fluid balance. And what is the role of potassium in case of the fluid balance. Okay. As we know, in our body we have 60% of our body is water. Okay, out of those 40% is intracellular fluid and remaining 60% will be now extracellular fluid. Okay, so जो 40% होता है that is present within the cells, and extracellular fluid includes our blood and between the cells and our cerebrospinal fluid. Okay, तो ये 60% extracellular fluid होता है total fluid में से, और 40% क्या होता है intracellular fluid. Now talking about the intracellular fluid, potassium is the most abundant mineral which is present inside the intracellular fluid, and here sodium is the most abundant mineral which is present in the extracellular fluid. ठीक है, तो अभी हमारी सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसमें सबसे ज्यादा किस आयन की कंसेंट्रेशन होगी? उसमें पोटेशियम आयन्स की कंसेंट्रेशन होगी, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें सबसे ज्यादा किस फ्लूइड की कंसेंट्रेशन होगी? किस मिनरल की कंसेंट्रेशन होगी? सोडियम की कंसेंट्रेशन होगी. ठीक है, वी नो दैट द मोमेंट ऑफ द जो हमारी अभी द osmolality, it is the number of electrolytes relative to the number of
टोटल फ्लूइड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है टोटल फ्लूइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोलिटी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो हमारी सेल में जितने अभी सेल में से फॉर एग्जांपल इफ वी अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो से दिस इज एन सेल। ठीक है, इसमें 30% वाटर है, 30% H2O, और उस 30% में कितने हैं, वी हैव 30 आयॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने मॉलिक्यूल्स है, 30 आयॉन्स है। और ये अभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी हमारे पास कितना है, 30% वाटर है, और 30 से 30 ml वाटर है, इधर भी 30 ml वाटर है, और इधर भी इसमें कितने हैं, 30 आयॉन्स सोडियम, इधर पोटेशियम के होंगे, इधर सोडियम के होंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आता है जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एज वेल एज द इनसाइड द सेल सेम होता है, तो क्या होती है, ऑस्मोलिटी दोनों साइड में बराबर होती है। तो हमारी सेल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, हमारी सेल नॉर्मली फंक्शन करती है। अभी सपोज से फॉर एग्जांपल अगर यहां पे इस 30 को घटा के, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 30 को क्या बनाएंगे, अभी 30 को 30 ही रखेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द, हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम 20 बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने सोडियम को कितना रखा, 20 रखा। व्हाट विल द वाटर डू, वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वाटर प्रेजेंट। ठीक है, इधर क्या होगा अभी, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन अभी क्या है, इधर कम है कंसंट्रेशन, क्योंकि इधर पानी ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम है, तो इधर से क्या आएगा, इधर से वाटर आएगा, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द इधर से वाटर तो इधर से क्या करेगा, अभी इधर से वाटर किधर जाएगा, इधर जाएगा, किसमें जाएगा, टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द आयॉन्स, सो दैट द कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो दोनों साइड में सेम मेंटेन करेंगे। तो अभी क्या होगा, हमारा सेल क्या होगा, श्रिंक, हमारा सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि सेल के इनसाइड फ्लूइड गया है। ओके, सो I'll explain this once more, we'll make it clear. See, what we are talking about is when the concentration of the ions is not equal or it is unequal on the either side. First we will talk about when it is less in the outside and then when it is less on the inside. Okay, say for example इधर हमारे पास 30 ml of water equal was in the earlier example we said that we supposed that 30 ions should be present and 30 ions should be present inside also. तो अभी इधर पे कितने हैं, इधर पे 20 ions है। ठीक है, 30 ml में कितने ions है, दिस इज एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड में 30 ml में 20 ions है, और इधर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में अभी कितने हैं, इधर 30 ml है, लेकिन आयॉन्स कितने हैं, 30 आयॉन्स है। तो कंसंट्रेशन अभी किधर कम है, कंसंट्रेशन एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड में कम है, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम है, या मिनरल की कंसंट्रेशन, सोडियम की कंसंट्रेशन इधर कम है। ठीक है, अभी सोडियम क्या करेगा, अभी वाटर क्या करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू, from extracellular fluid to the intracellular fluid so that the concentration of the electrolytes is maintained. इधर जब पानी ज्यादा जाएगा तो ये आयॉन्स तो सेम ही है, आयॉन्स तो नहीं जा रहे, तो कंसंट्रेशन बराबर करने की, ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन उस प्रोसेस में क्या होगा, the cell is containing now more water than it is supposed to have, so the cell will, जिसको हम बोलते हैं bulging of the cell, ठीक है, या swelling of the cell. And in some circumstances what might happen, cell might burst also, right? अगर ज्यादा फ्लूइड हो गया, जितना सेल होल्ड कर सकता है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, सेल बर्स्ट भी हो सकती है, राइट? सो वी हैव ऑब्वियसली, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो इधर हमने क्या देखा कि कंसंट्रेशन आयंस की कम थी, इसलिए वाटर मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो इधर से वाटर इधर चला जाएगा, सो दैट द
osmolality can be maintained on the either side. So what happens is it results in the swelling of the cell, or in some circumstances या bulging of the cell. Some circumstances cell might burst also. और दूसरा अगर हम एग्जांपल लेंगे, अभी हम यहाँ पे 30 रखेंगे और यहाँ पे 20 रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होएगा, अभी वाटर इधर से इधर मूव होएगा, राइट। तो जब सेल में से पानी चला गया तो सेल को क्या होगा, सेल विल श्रिंक लाइक इन केस ऑफ द डिहाइड्रेशन, राइट। सेल का साइज अभी छोटा होता जाएगा, जितना उसमें पानी हम निकालेंगे उतना सेल का साइज छोटा होता जाएगा। दिस इज व्हाट रोल पोटेशियम प्लेज इन केस ऑफ द मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए potassium plays such role. Okay, so this is regarding this, and now next we will discuss regarding the muscular contraction. We'll first discuss about the nerve impulse, then lastly we'll discuss about muscular contraction. अभी नर्व इम्पल्स में likewise what will happen is sodium, as we know, is outside and potassium is inside. So what happens is sodium moves inside, potassium moves outside. ये inward movement of the sodium and outward movement of the potassium creates the difference in the electrical potential of the nerve, right? In the electrical potential of the nerve cell, which results in the generation of the electric impulse. Results in generation of electric impulse. Okay, so when the sodium moves inside the cell and potassium moves out of the cell, results in change in the so we'll write here, change in voltage of the cell and nerve impulse is generated. Okay, so what happens is when the sodium moves inside, the movement of the sodium ions into the cell and potassium ions outside the cell results in the change in the voltage of the cell and therefore there is generation of the nerve impulse. अभी ये nerve impulse हमको कितना different functions करने में मदद करता है. You all know that all the body functions are only carried out because our brain sends the signals for the function to be carried out. So for our nervous system, or in short for our body to function properly, our nervous system must function properly. So the electrical potential can only be generated in the right proportionate if the amount of the sodium and potassium is present into the equal proportionate or into the desired proportionate. ठीक है, तो इसी तरह से अभी अगर हम बात करेंगे in how does it help in the muscle contraction. Simply our nervous system aids muscular contraction, which is dependent upon the potassium, right? So our nervous system will what do? It will aid us into the muscular contraction, which is totally dependent upon the potassium, right? For the nervous system to send signal to the muscles for their contraction, that is generated actually by the potassium along with the sodium. Okay, इसी तरह से it also helps us in normal heart beat या rhythmic
beat, right? By moving how does it help in the rhythmic heartbeat? But by moving in and outside of the cell. When the potassium moves outside the cell and sodium moves into the cell, that generates the rhythmic heartbeat and also help us in our muscular contraction, right? So iske alawa, now if the potassium is there, a low amount or altered amount of the potassium is present inside our body, that will weaken our muscular contraction, right? So, and also the less amount of the potassium present in our body will result in the irregular heartbeat also, right? So weakness of the muscles and irregular heartbeat can result because of the altered levels of the potassium in our body. And also if we talk about increase in the potassium level of our body, so what will happen to the heart? Obviously there will be increase in the number of the contractions. So heart will get dilated, right? So there will be dilatation of the heart, increase in the potassium level. Okay. So these are some of the functions of the potassium. Some of the important functions of the potassium. So till now we can summarize it as it functions as an electrolyte in our body and regulates some of the important functions, like it helps us in maintaining the fluid balance and also nerve conduction and also muscular contraction. Okay, that phenomena we have explained in detail. So iske alawa, if we talk about daily requirements, 3500 mg to 4700 mg is required per day for a normal human being, and usually our diet is sufficient to provide this. Since potassium is not produced in our body, so it has to be essentially supplied with our food. So some of the foods which we will discuss about, which contain abundant sources of the potassium are, we have green leafy vegetables, we also have cereals, we have banana, we have apricot, we have potatoes, we have spinach, we have peas. These are some of the abundant sources of the potassium. Okay, so along with these other sources you must see for yourself. Or iske alawa, if we talk about the deficiency, and when there is deficiency of the potassium, the phenomena is known as hypokalemia, and increase is known as, likewise it is known as hyperkalemia. जब potassium की level कम होगी तो ये क्या होगा? It is known as hypokalemia, and when it is more, it is known as hyperkalemia. Okay. Is how much is the normal blood potassium level? ठीक है. So and calcium level of 3.6 to 5.2 millimoles is the normal potassium level. Okay, 3.6 to 5.2 millimoles per liter is normal. Okay, below 2.5 is life threatening. Okay, so जब 2.5 के नीचे जाएगा, या usually what we can say is जब 3.3 से नीचे जाएगा hypokalemia, लेकिन जब 2.5 से नीचे जाएगा severe hypokalemia. So okay, this hypokalemia is dangerous for any individual. And also 5.2 से ज्यादा जब जाएगा hyperkalemia, and likewise severity will increase with the increase in the volume of the potassium. जितना increase हो जाएगा उतना ज्यादा severe होगा, जितना decrease हो जाएगा उतना ज्यादा severe होगा. Okay, so normal is 3.6 to 5.2 millimoles per liter. Okay, of the body fluid. Then we have and hypo and hyperkalemia. Okay, so I hope this explains all about the potassium. In our next class we will study about sodium. Thank you.